Hello everyone, welcome back to your own channel Thakors in Europe. Thank you so much for the support and crossing 1000 subscribers as I requested in the last video, and I hope my last video was useful for all of you. And more than that, I request everybody who do not understand English to watch till the end because I am now making all the videos in Hindi and English both so that it can serve the utilization for both the segments. Okay, and third is I hope you all are doing great job and enjoying the life to the fullest. I'm back with another most awaited topic where I have got a lot of messages saying that people want to know because they generally leave India and their countries and they don't know what should they do with their saving account, and they keep sending money to their existing accounts. And as you know, this is a non-scripted video, so it is definitely pardon me for any words which I miss or anything if I say by mistake any wrong, because as I said, I directly speak from the heart. So, and yes, I'm very happy to share that one more update that our WhatsApp group, which I made just few months back, has crossed 500 plus users, and we have really matured as a group in that because our topics have changed from TRC, Blue Card, Visa to now daily routine and benefits in Poland, EHIC card. So maybe I will be soon making another group for the newcomers so that they can help they can get help from the people who are already experienced. So I'm going to add some experienced people to the new group. But this is how we serve the humanity. This is how we serve the people, and let's support each other so that everybody gets help, and let's make the world more beautiful by helping each other. So without wasting time, I will move to the topic where I have promised last time that I'm going to cover this topic, like what is an NRI, why you should open the bank account, or why you should not be using the saving account in India or any other country you have, because there are certain legal restrictions which might be the problem if you continue to use. So let me share my screen, and if you have any questions, any comment, any feedback, please do feel free to share and put in the comment below. But I will request everybody, if you feel that this video has helped somebody and if it has served as a utility, please share with your friends, like and subscribe so that it can motivate me to further continue making these kind of videos. So let's start our topic without wasting time, and I will try to make this video as short as possible in both the languages so that it doesn't become boring. So I have tried to remove the contents, but if you want to go more in details, then in the bottom in the description, I'll be sharing the links where you can refer for more details, or the you can say the source of the information that I have. You can refer to the link given there. So let me start. So first of all, you leave your country, you continue with your bank account, and you open your bank account in the new country, overseas account, and after that you use vendors like Wise and other things to use your existing account in the home country, and you think that it is okay, but it is not okay, because for all the NRIs you must open three types of account, any of these three of types of account. One is NRE account, other is NRO account, and there is another account which may not be applicable in our case because we are in Poland and our currency is not falling in that category. But before we do that, let's understand what is a non-resident Indian, or who is a non-resident Indian, or NRI. So an Indian abroad is popularly known as non-resident Indian. NRI is legally defined under the Income Tax Act 1961 and FEMA Act, or Foreign Exchange Management Act 1999, for applicability of respective laws. So Income Tax Act requires physical presence of 182 days or more, whereas FEMA requires 183 days or more for a person to become NRI or non-resident India. Income Tax Act considers the physical presence of a person in the current financial year, whereas FEMA considers physical presence of a person in the preceding financial year. So NRI is defined under FEMA as a person resident outside India who is either a citizen of India or is a person of Indian origin, or PIO. So if I summarize, or in summary, if you are a person who is out of India
for more than, let's assume, 183 days, not 182, let's say 183 and more days, then you are, and that is for, and if you have accepted any employment or you are staying for longer term than 183 days, you are an NRI. Okay, so that is the definition of an NRI. And let's have a look on the definition of NRI as per FEMA Act. So you can have this chart, you can see this chart. So in the previous financial year, if you are resident in India for more than 182 days, okay, or 183 days, let's say, for FEMA Act. If answer is yes, then have you gone out of India for taking up employment, which is our case, carrying out business or vacations, any other purpose for which stay outside India is uncertain. If your answer is yes, you are an NRI. If your answer is no, you are a resident. If you have come to India, not out of India, if you have come to India for taking up employment in India or carrying out business or vacation or any other purpose for which stay in India is uncertain, if your answer is yes, then you are a resident of India, not non-resident. You are a resident of India. Okay, and if your answer is no, then you're non-resident of India. So that is second thing. So if I would like to summarize, forget about FEMA Act, forget about NRI Act. Let's keep it simple. If you have been out of India for more than 182 or 183 days, I have shared the description, link in the description. That means you are an NRI and you must open any of these accounts, which I'm going to cover in the further slides. Okay, and of course, tourist visa doesn't apply in this category because generally tourist visas are granted for 90 days, so they don't fall under this category. So now I hope the definition of NRI is clear. So in summary, 182 or 183 days more or more you're out of India, and if you have a source of income outside India, you are an NRI, or you're residing in India, or you're working, sorry, or you're residing out of India, or you are a resident out of India. It could be dependent also. So you are an NRI. Now, as an NRI, you can have three types of account. One is NRE account, other is NRO account, and another is FCNR or B account. So now, what is the difference between all these three accounts? So let's go by the definition. If you are a NRI with income in India, it is mandatory to open an NRO account or convert your existing saving accounts into NRO account. Okay, an NRO account allows you to efficiently manage your Indian income. So, for example, you had properties in India out of which you're getting rent. You had some, let's say, investment or a business which you have already in India and you have moved out of the country. That means you cannot be doing that operation using your existing saving account, and you must declare your status as soon as you complete 6 months as NRI. And as an NRI, your existing saving account should be converted to NRO account. That is as per the FEMA law. Okay. Now, NRI account is needed. So NRE is second type of account that is needed for maintaining your overseas earning in Indian currency. For example, now we have account in Poland, we get our salary in Poland, and what we do, we use Wise or Revolt and transfer our fund in India. That is wrong because uh, for that we should have, and it's been more than 6 months. So now we should have NRE account, and in NRE account, we should be sending our existing fund either directly by the wire transfer, or we can use Wise services or any other service provider like Revolt or anything, and then we send. But that amount which we are earning in an overseas country should be going to our NRE account, not the saving account. And third type of account is FCNR, which is needed for your earnings, are in specified currency. So there are certain list of the currencies which is eligible for FCNR account. But as our target is Polish currency, which doesn't fall under the category of FCNR account, so we will talk more about NRE and NRO accounts. So for all the Polish Indian people or NRIs, we are more entitled for NRE and NRO accounts, so we can ignore FCNR topic. But people who are staying in other countries where you have currency in euros, Great Britain pound, dollars, etc., so we can definitely talk about FCNR account. So now on the next slide, I'm going to explain what is the difference between the. So as I said, we'll be more focused about NRO and NRE account, their difference, the applicability, the finances, the taxes. So, but yes,
Once it is done, we will talk about FCNR also briefly. So now let's talk about NRE. NRE, as the name states, non-resident external account, which is the most important account for all of us because we all are IT professionals working here. So this is more important for us. Now, what is the eligibility? As I've already explained, if you are an NRI for more than 183 days, then and if you have a source of income out of India, not in India, out of India, then you are eligible to open NRE account and you must open non-resident external account. What is the purpose? You should opt for NRE account if you want to hold or maintain your overseas earning in Indian currency. As I explained earlier, requirement is to have fund coming from foreign source either by wire transfer or from overseas local bank or using providers like Wise or Revolt. So whatever we have been doing till now in our saving accounts in India, we must stop it and we must open our NRE account and start transferring these amounts to NRE instead of our existing saving account. And our saving account should also be converted into NRO after you have left India for more than 6 months. What is the benefit of an NRE account? So any interest on the NRE, which is non-resident external account, is fully exempt under Section 10, Clause 4, Clause 2 of the Income Tax Act without any limit. Since the interest on such deposit is fully exempt, the bank will not deduct any tax on such interest at source, whether it's principal or whether it's the interest amount, because both are exempted. So an NRE saving accounts will only allow you to deposit funds in a foreign currency. So what is the requirement for NRE account? You should have an account in Poland or let's say any country where you work or stay. And when you transfer that fund, you can either directly transfer using the wire transfer or you can use third party providers like uh, your Wise or Revolt or any other vendor you know, Skrill or anything. You can use that and you can transfer but that amount from foreign. So source of the fund should be foreign and that should go to NRE account. As an NRI, this is something you should do. Now, let's start with NRO, which is called non-resident ordinary account. So, non-resident ordinary account is basically for those people who have a source of income in the domestic place or maybe in the local country. For example, you're in India and you have a source of income from rental, from fixed deposit, from some business or from some investment. That amount should come in your NRE, which is non-resident ordinary account. Uh, and this account can, so you don't have to open a fresh account for NRO. You can get your existing saving account converted to the NRO account, which is fine. And and what is the purpose of it? So a non-resident ordinary account is a popular way for many non-resident Indians NRIs to manage their deposits or income earned, as I explained earlier. Now, what is the disadvantage, or you can say, or how the taxation is going to work? So, in non-resident ordinary account, your tax is going to be uh, whatever earning you get, that is taxable as per the tax law, and it will be both principal and interest. So, let's say you have earned 1 lakh rupees, and as per the tax slab, whatever is the applicable tax, and let's say that 1 lakh is interest amount, so you will have to pay the taxes. And so NRI saving accounts, you can also deposit funds in Indian rupees. So basically, I hope you got an idea what is the difference between NRO and NRI. So since we all are NRE now because we've been staying for more than 6 months in Poland, so we must open an NRE account for sure because we send our money every month to India. And if we do not have any other source of income in India, then we don't need to open NRO account or convert saving accounts to NRO. But NRE is a mandatory account that we must open as soon as possible if we are sending money from overseas to this country so that we can be tax free. I hope this is clear to everyone. Now, some points which I have noted for the welfare of everyone, which is you cannot transfer money to a NRE account from a saving account in India. It is very clear. If you transfer amount from saving to NRE, no, because for the prerequisite for NRE account is the source of fund should be foreign, and that is the reason we open this account. However, you can transfer money from NRO to NRE account. You can also transfer money from one NRE account to another, and you can convert your existing saving accounts to NRO account, but not NRI account. I hope this is clear. So let's move on to the next point. So here I'm going to just briefly describe about
the differences between the various types of accounts. So first is NRO account, second is NRE account, third is FCNRB account. As I have promised earlier, I'm going to explain in the last the FCNR account as well. So currency denomination for NRO account is going to be Indian rupees, and NRE account also Indian rupees, because purpose of both are to keep fund in the Indian currency. Uh, and if you have a source of income as an NRI from the foreign overseas, then it will be converted to INR. So obviously conversion charges will be applied. But FCNR account is an account where you can keep your foreign fund in the Indian accounts in the existing form. For example, if you choose dollar, that your amount should be saved in dollar or Canada, or let's say Great Britain pound, CHF or JPY, then you can keep saving in the exact same form with the same value. What is the purpose of the account? An NRO account can be opened by an NRI to deposit her earning that originate from Indian in INR. An NRE account is for the, so obviously if you have Indian source of earning in India, then yes, you should open NRO. If you have source of earning from the outside India, and if you are an NRI, then you must open NRE account. But an NRI can open an FCNR account to deposit his or her earning from that individual resident country in any of the nine currencies mentioned above. So means if your source of funding, let's say you are in Netherlands, USA, or Australia, or Singapore, or any other country, and if your currency or your level of earning comes in any of these currencies, then yes, you must open FCNR account, and and in the local account also your currency will be kept or preserved in the same format or same currency. So that is another thing, how the taxability will apply. So both principal and interest earned in NRO account is taxable, while entire balance means interest and principal both are exempted from tax in NRE account. So obviously for us NRE is most relevant in Poland, and interest earned on FCNR account is exempted from tax. So that is also relevant for the people who are earning dollars, pound or any other countries, sorry, currencies. And types of accounts. So individuals can open saving, current or fixed deposit accounts under this category, which is NRO account, like we do in India. Then NRE accounts facilitate saving, current and fixed deposit accounts. So obviously that is also same, but in FCNR account, you can only open fixed deposit account with a minimum maturity period of 1 year. So now let's move on to the next thing. So joint account facility. So obviously your NRO account can be opened with another NRI or an Indian resident. Okay, so you can have joint account. So if you have like you are in, let's say you are in Poland and your wife is in India, even then NRO account can be opened. But let's say if you are in Poland and your wife is in India, but you can then in that case you cannot open a joint account with your wife for NRE. So you both has to be NRI to open an NRE account. One is NRI and one is in India. No, then you are not eligible to open a joint account as NRE. And same applies for the FCNR account. If you both are NRI, then you can open FCNR account. Otherwise, if one is NRI and one is not, then yes, you are not eligible to open the account. Now, repatriation of balances means how much amount you can transfer from using this NRO account to other countries. For example, you need money from India and you want to send to US, you can transfer maximum 1 million USD or equivalent in a fiscal year if you have an NRO account, which is called repatriation of balances. Same with NRE account. In NRE account, you can transfer entire balance to other countries. So that is entire balance is fully repatriable. Repatriable means you can transfer the entire fund to the other countries from NRE account. Entire balance fully is fully repatriable even in FCNR account. So in both the accounts, you can transfer entire fund to the other country, but in NRO account, you can transfer only 1 million USD, not more than that. Now, period of fixed deposits, it depends on the financial situation. Um, Institution, sorry, and same apply for NRE and NRO both the accounts. But in FCNR account, maturity tenure is allowed from 1 to 5 years, and exchange rate. So uh, the NRO account, because it keeps everything in INR, so it doesn't affect your currency value as per the exchange rate. But because NRE account gets money from outside the source of India, so obviously exchange rates affects the value of the money. And FCNR account also it gets affected based on the name rate conversion. So only NRO account is intact with this.
Now let's move to the next slide. So the most important question comes, what if I continue to use existing Indian saving account? If you don't open NRE account, if you don't open NRO account, what will happen? So under the Act, any individual who fails to adhere to the guidelines is liable to pay a penalty of up to 3 times the amount involved in the existing resident savings account, or rupees 2 lakh when the sum is not quantifiable. Means whatever amount you keep in the saving account, you will be charged penalty. As per the Foreign Exchange Management Act, when your resident status changes to that of an NRI, you would have to close the existing resident saving bank account or convert it into NRO account, as I stated earlier. You must do it. Under Section 13 of Foreign Exchange Management Act 1999, you may be liable to pay penalty up to 3 times the amount involved. Means whatever saving account you have, you may have to pay penalty 3 times, or up to 2 lakh if the amount is not quantifiable. Means you cannot decide how much it was. So 2 lakh you have to pay penalty for sure. So further penalty of rupees 5,000 per day may be applicable till the issue is resolved. So means when you get caught, after that 5,000 per day additional penalty will be applied. So just imagine how dangerous it is to not convert your account into the NRO or NRE account, but preferably NRE for all of us. So I hope you like the video. Please like and subscribe your channel Thakurs in Europe. Do not forget to check description for this video, and thank you for watching. You have a good day. And now let me summarize this video in Hindi. तो जैसा कि मैंने अभी आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के बारे में कि हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि एनआरआई कौन होता है, क्या होता है। तो आइए मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल में ठाकुर सिंह यूरोप, और मैं आपको बताने वाला हूं एनआरआई क्या होता है, आपको किस तरह के अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, आपको एनआरआई अकाउंट खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने सब्सक्राइब किया और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर किया, जिसकी वजह से हम 1000 सब्सक्राइबर्स को रीच कर पाए हैं। लेट्स होप इट रीचेस टू द मोर वीडियोज़। एंड आपको ऐसा लगता है कि वीडियोस अच्छी हैं, किसी के काम आ सकती है, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो को शॉर्ट बनाते हुए, और मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से, और मैं इसको समराइज कर रहा हूँ बेसिकली। तो बट यस, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन कमेंट्स। आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने सवालों को, और साथ में आप इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है उनको जरूर चेक कीजिए, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट एविडेंस एंड मेरे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भेजने में हेल्प कर सकते हैं। मेरे पास कोटक महिंद्रा का अकाउंट है, और मैंने रिसेंटली उसका एनआरई अकाउंट कन्वर्ट कराने के लिए अप्लाई किया। सो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी वीडियो तब तक नहीं बनाता हूँ जब तक कि मैंने उस चीज़ को खुद ना ट्राई किया हो। तो अब जब खुद ट्राई किया है तो आई एम वेरी क्लियर ऑन व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम नॉट डूइंग। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जानने के लिए कि एनआरई होता कौन है। तो एनआरई हर वो इंसान या हर वो इंडियन है जो इंडिया के बाहर रहता है, और उसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। तो इनकम टैक्स एक्ट में 182 डेज या ज़्यादा, और फेमा एक्ट में 183 डेज या उससे ज़्यादा टाइम के लिए जो बाहर रह रहा है इंडिया से। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान और ये नेपाल वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रेफरेबली यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, मलेशिया और एनी अदर कंट्रीज अगर रह रहा है तो वो बंदा एनआरआई कहलाता है। स्पेशली अगर वो उसने वहाँ जाके या तो वहाँ का रेजिडेंट स्टेटस ले लिया है, ब्लू कार्ड, टीआरसी या रेजिडेंट कार्ड ले रखा है, या फिर वहाँ पर वर्क कर रहा है 183 डेज या उससे ज़्यादा के लिए, तो वो एनआरआई कैटेगरी में फॉलो होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन अगर मैं समझाऊँ तो ये हो सकता है। और उसके बाद ये फेमा एक्ट का एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी कंडीशन में एक बंदा एनआरआई है, लेकिन आप उसको सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो 183 डेज या उससे ज़्यादा टाइम के लिए है तो वो एनआरआई कहलाता है। आप उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। और एज एन एनआरआई आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा काम करना चाहिए, जिसमें आता है आपका ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। एक एनआरई अकाउंट होता है, एक एनआरओ अकाउंट होता है, और एक एफसीएनआर अकाउंट होता है। क्योंकि हम लोग पोलैंड में हैं तो हमारी करेंसी कुछ लिस्ट ऑफ करेंसी है जो एफसीएनआर अकाउंट के लिए एलिजिबल होती है, उनमें नहीं है। तो मैं इसीलिए एफसीएनआर पे ज़्यादा फोकस नहीं करके एनआरई और एनआरओ के बारे में ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ये हम लोगों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। बिकॉज हम लोगों का मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो या तो एनआरओ अकाउंट की ज़रूरत है उनको, या एनआरई की। तो जैसे आपने इंडिया में आपका जो स्टेटस है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपका उसका रेंटल इनकम आता है, कोई बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट है, उसका इनकम आता है, तो और आपको 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, यानी 183 डेज से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तो सबसे पहले आपको वहाँ का सेविंग अकाउंट जो है उसको एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहिए। और वो जो इनकम है वो एनआरओ अकाउंट में आना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट में नहीं आना चाहिए। उसका फ़ायदा बस यही है कि आपको जो भी
एनआरओ अकाउंट में आता है, उसका इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल होता है, और जो भी सोर्स ऑफ इनकम है एज पर द टैक्सेशन लॉ होगा वहाँ का। तो एनआरओ भी एक तरह का सेविंग अकाउंट है, बस फर्क इतना होता है कि वो इंडियन इनकम के लिए आप जो है खुलवाते हैं अकाउंट। एंड हर एनआरआई को खुलवाना चाहिए, या खुलवाना या आपका अगर सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में नहीं है कोई, तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत नहीं है। बट एनआरई अकाउंट जो है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट बोलते हैं इसे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। क्योंकि क्या होता है, इसका जो सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यही है कि आपका जो सोर्स ऑफ फंड है वो ओवरसीज होना चाहिए। ओवरसीज से अगर आपको फंड आ रहा है तो आपको एनआरई अकाउंट जरूर खुलवाने की जरूरत है। और वो फंड आप जैसे वायर ट्रांसफर से भी, बैंक लोकल बैंक जो आपका, जैसे पोलैंड में कोई भी बैंक है, बीएनपी परिवार हो गया, आईएनजी हो गया, सिटी बैंक, वटेवर, सो आप उनके वायर ट्रांसफर को यूज करके फंड ट्रांसफर करते हैं, या फिर आप वाइज, रिवोल्ट या स्क्रिल, कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यूज करते हैं, तो आपको इस वाले अकाउंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो आपका अमाउंट जो है एनआरई अकाउंट में आना चाहिए। तभी आपका जो वो इनकम है इन इंडिया वो नॉन टैक्सेबल होगा, ना उसका प्रिंसिपल टैक्सेबल होगा, ना उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। और कई बैंक्स तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी देते हैं कंपेयर टू नॉर्मल सेविंग अकाउंट। तो ऑब्वियसली एनआरई अकाउंट इज समथिंग जो ज़्यादा रेलिवेंट है हमारे लिए। और एज पर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 4 क्लॉज 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, देयर इज नो लिमिट टू इट। तो आप जितना भी इनकम एनआरई अकाउंट में अगर मंगवाते हैं, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, जबकि एनआरओ अकाउंट में टैक्स लगता है। आप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एनआरओ अकाउंट जो है, आप एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट को भी एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं आप, लेकिन सेविंग अकाउंट से एनआरई या एनआरओ अकाउंट में फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। यू कैन ट्रांसफर योर फंड फ्रॉम एनआरओ टू एनआरई अकाउंट। एनआरओ से एनआरओ में, एनआरई अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, और अपना एग्जिस्टिंग जो सेविंग अकाउंट है उसको आप एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं, बट नॉट एनआरआई और एनआरई अकाउंट में नहीं करा सकते आप, ठीक है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आते हैं हम डिफरेंसेस जो है एनआरओ, एनआरई एंड एफसीएनआर अकाउंट के बारे में। तो मैं मोटा मोटा डिफरेंस बताता हूँ आपको, इन डेप्थ जाके वीडियो को ज़्यादा बोरिंग ना बनाते हुए। लेट्स मेक इट सिंपल कि आपका जो एनआरओ अकाउंट है उसमें ऑब्वियसली उसका पर्पस क्या होता है कि आपका इंडियन रुपीज़ में सेविंग हो। सेम एनआरई का पर्पस भी होता है कि आपकी अर्निंग तो बाहर हुई है लेकिन इंडिया में आप सेविंग कर रहे हैं, तो इसलिए एनआरई अकाउंट भी आईएनआर में होता है। जबकि एफसीएनआर अकाउंट का पर्पस क्या होता है, आपने जो बाहर पैसा कमाया उसको आप इंडिया में सेव करना चाहते हैं, लेकिन उसी लोकल फॉर्म में, उसी करेंसी में, यूएसडी में कमाया तो यूएसडी में ही इंडिया में एज यूजुअल रहेगा। तो इसमें आपको इसलिए एफसीएनआर अकाउंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस कैटेगरी में सिर्फ वही अर्निंग्स अवेलेबल है जो यूएसडी, सीएडी, एयूडी, एचकेडी, एसजीडी, यूआर, जीबीपी, सीएचएफ एंड जेपीवाई, इन करेंसीज में अर्निंग है, वही सिर्फ एलिजिबल है इसके लिए। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की अर्निंग जो है वो एलिजिबल नहीं है एफ सी एन आर अकाउंट खुलवाने के लिए। जैसे हमारी जलोटी है तो जलोटी इज नॉट एलिजिबल फॉर एफ सी एन आर अकाउंट, ठीक है। फायदा बस ये होता है कि आपका जो एनआरओ अकाउंट है उसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो है अर्न होते हैं, वो सारे टैक्सेबल होता है। एनआरई अकाउंट में आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता है, सेम एफ सी एन आर अकाउंट भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता है। और कौन खुलवा सकता है अकाउंट, सिर्फ इंडिविजुअल्स जो एनआरआई है वही सेविंग, करेंट एंड फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में खुलवा सकते हैं अकाउंट को। और साथ में आपका जो है ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है की फॉर्म में आपका एफसीएनआर अकाउंट होता है। और एनआरई अकाउंट जो है वो भी सेविंग, करंट एंड फिक्स डिपॉजिट में होता है। सिर्फ एफसीएनआर में ही एक्सेप्शन है और किसी में नहीं, जिसका पीरियड 1 ईयर होना चाहिए। उसके बाद जॉइंट अकाउंट आप एनआरओ अकाउंट में खुलवा सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका, मतलब another NRI or an Indian resident should be, so it can be opened with another NRI or an Indian resident, मतलब कि सपोज आपकी वाइफ जो है वो इंडिया में है और आप एनआरआई हैं, आप बाहर हैं दूसरे देश में, तो आप एनआरओ अकाउंट खुलवा सकते हैं, नॉन रेजिडेंट और नई अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वाइफ इंडिया में है और आप अगर दूसरी कंट्री में है तो आप एनआरई अकाउंट नहीं खुलवा सकते, बिकॉज उसकी जॉइंट अकाउंट, सॉरी, एनआरई जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, क्योंकि जॉइंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों ही जो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स है दोनों ही एनआरआई होने चाहिए। इसीलिए बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट, आई रिपीट, जॉइंट अकाउंट जो है एनआरई खुलवा सकता है तभी जब दोनों ही जॉइंट अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो एनआर आए हैं। अगर एक एनआरआई है और एक एनआरआई नहीं है तो वो जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता। और एफसीएनआर अकाउंट भी इट कैन ओनली बी ओपन विद अनदर एनआरआई। तो एफसीएनआर अकाउंट में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रीपैट्रिएशन क्या होता है कि आप कितना फंड जो है अपने एनआरओ या एनआर ई या एफसीएनआर अकाउंट से आप दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो एनआरओ अकाउंट है
उसका लिमिटेशन है 1 मिलियन USD और इक्विवेलेंट इन अ फिजिकल ईयर। जबकि NRE अकाउंट पे कोई लिमिट नहीं है, आप पूरा बैलेंस रिपाट्रिएबल होता है, यानी आप ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी कंट्री में। और FCNR अकाउंट में भी सेम कंडीशन है, आप पूरा कर सकते हैं ट्रांसफर। पीरियड ऑफ फिक्स डिपॉजिट जो है वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, NRO में NRE में भी डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पे। और जो FCNR अकाउंट है उसमें मैच्योरिटी जो है डिपेंड करती है 1 to 5 years टेन्योर पे, जो भी आपका एग्रीमेंट है। ठीक है। और लास्ट इज इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। ऑब्वियसली NRE अकाउंट जो है, NRO अकाउंट जो है, उसमें तो कोई इफेक्ट होता नहीं क्योंकि INR में होता है फंड। लेकिन NRE अकाउंट में आपका फंड जो है वो बाहर से आता है, तो एक्सचेंज रेट से इम्पैक्ट करता है। और यहाँ पर FCNR अकाउंट में भी डिपेंड करता है आप किस करेंसी से किस करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हैं, इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं अगर इस सबको समराइज करना चाहूँ या कंक्लूड करना चाहूँ, या मैं लेट्स से इसको ये बताना चाहूँ कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि भैया आपको 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है अगर पोलैंड में, और आपका स्टेटस NRI चेंज हो चुका है, तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि आप जल्दी से जाके NRE अकाउंट खुलवाइए। और वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में अभी भी हैं, पैसे आ रहे हैं इंडिया से, तो भाई NRO अकाउंट खुलवा लो जितना जल्दी हो सके। क्योंकि अगर आपने नहीं करवाया ऐसा, तो आपको जो है इसमें ये एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। और पनिशेबल ऐसा है कि आपका जितना भी अमाउंट उन्होंने जब भी पकड़े गए, जब भी पता चला उनको, तो जितना भी अमाउंट है उसका 3 टाइम्स आपका जो है वो पनिशमेंट मिलेगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये व्हाट इफ आई कंटिन्यू टू यूज एग्जिस्टिंग इंडियन सेविंग अकाउंट, तो उसमें ये 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व इन एग्जिस्टिंग रेजिडेंट सेविंग अकाउंट, जितना भी सेविंग अकाउंट है उसका 3 गुना पेनल्टी है। और अगर ये नहीं पता चला कि कितना क्वांटिफाइबल अमाउंट नहीं है, तो 2 लाख आपको पेनल्टी लग जाएगी। और उसके बाद जिस दिन पकड़ेगा उस दिन से 5,000 पर डे के हिसाब से आपका, जब तक इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक आपको पेनल्टी लगेगी, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाएगा, यानी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके खुलवा लीजिए NRE अकाउंट और NRO अकाउंट अगर ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ठाकुर सिंह यूरोप। और मैं जल्दी से आपका आज ही, इनफैक्ट आज या कल में, एक EHIC कार्ड के ऊपर एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ। प्लीज़ उसको शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है। इमेजिन आप पोलैंड में आए, आपने सोचा मेरे पास तो इंश्योरेंस है, सब कुछ है, और इंटरनेशनल इंश्योरेंस आपका एक्सपायर हो गया है, जो जनरली 1 साल में सभी का हो जाता है। और आप फिर यूरोप की किसी और कंट्री में गए और वहाँ पर आपको कोई मेडिकल इश्यू हुआ, तो क्या होगा? फिर आपका इंश्योरेंस पोलैंड वाला काम नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको एक EHIC कार्ड, जो NFZ के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, अप्लाई करना होता है। तो उसको अप्लाई कीजिए, और उसके बेस पे आप यूरोप के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, शेंगेन कंट्रीज में, आपको जो है मेडिकल सर्विसेज के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल Thakos in Europe, and I'm going to soon upload another video on Venice trip, because we are soon going to Venice for a trip, and I'm going to tell you how uh, you can visit Venice in a very cheap price. So please keep supporting, keep enjoying the life, and have fun. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत, एंड वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।